Hello students, myself Chand Singh, BSc Medical student at Baba Farid College Deon. So today we are going to study some important questions from your chapter Diversity in Living Organism. So let's start. So first question is, what is kingdom Animalia, and explain the basis of its classification. So as you know, the R.H. Whitaker divide all the living organisms that are present on earth into 5 kingdoms, and that kingdoms are Monera, Protista, Fungi, plants and Animalia. So we study now the kingdom Animalia. So kingdom Animalia include the organism that have eukaryotic, that means they have well developed nucleus, or their nucleus have nuclear membrane, and these organisms are multicellular, heterotrophs mode of nutrition, that means they don't prepare their own food, they depend upon the autotrophs, and they are the mobile organism, that they can move, they can locate. So the next part of the question is the explain the basis of its classification. So किन basis पर हम इनको आगे divide करते हैं. So first is level of organization. So level of organization क्या होता है, जैसे कि some organism have cellular level of organization, and some have tissue level of organization, and some have organ level of organization. So on the basis that the organism have cellular body or organ level body, so we divide into further kingdoms, into further phylums. So next is the body symmetry. So body symmetry क्या होता है कि हम उनकी जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो हम कितनी एक्सिस से उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो उनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्टली इज दी रेडियल सिमेट्री, रेडियल बॉडी सिमेट्री, दैट हैव we can divide a organism into 2 equal part from the more than one axis. So next is the bilateral symmetry. In this symmetry we divide the organism into 2 equal part from only one axis. So we as all the kynodermates, or we take if the example of starfish, starfish have radial symmetry, that we can divide two starfish into equal part more than one axis. हम एक से ज़्यादा एक्सिस से स्टारफिश को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि एग्जांपल मैमल्स और ह्यूमंस की हम एग्जांपल लें, तो हम इनको 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम ओनली वन एक्सिस, दैट मीन्स दे हैव बायलैटरल सिमेट्री. सो नेक्स्ट इज जर्मिनल लेयर्स. सो जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, जैसे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. जिन ऑर्गेनिज्म में जो तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एंड द ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली 2 germinal layers are known as the diploblastic. So on the basis of germinal layer we divide a living organism or kingdom Animalia into 2, first is triploblastic and diploblastic. And another is nature of coelom. So उनके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो एसिलोमेट, अगर ट्रू कैविटी नहीं प्रेजेंट है तो सीडोसिलोमेट, एंड अगर ट्रू कैविटी प्रेजेंट है तो सिलोमेट. सो नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन. अगर उनकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है तो हम उन्हें कह देते हैं कि दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विद सेगमेंटेड बॉडी, और नहीं है तो हम प्लेस दैट ऑर्गेनिज्म into another group. So next is the presence of notochord. The organism that have notochord are known as chordates, and the organism that have not notochord, that are known as non-chordates. And the some organism have notochord at only some stages of life, that are known as protochordates. So we move to the next question. So next question is explain phylum Porifera with example. So Porifera are the group of organisms that have pores in their body, therefore these organisms are known as
are placed in the phylum Porifera, and the name of the phylum drawn from their body structure. So these have cellular body organization, and these have canal system for the entry of food and exchange of material. So इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड स्केलेटन से कवर होती है. सो इनको हम कॉमनली स्पॉन्जस भी कहते हैं. इनकी एग्जांपल है स्पॉन्जिला, साइकोन, यूप्लेक्टेलिया. So we move to the next question. Next question is what are the triploblastic organism? Explain with example. So triploblastic organism जैसे कि मैंने आपको बताया जिनमें 3 germ layers present होती हैं, that are ectoderm, mesoderm and endoderm. The organism that have all the 3 layers are known as triploblastic organism. So इनमें जो एग्जाम्पल आ जाती हैं जैसे कि मोलस्कास, वॉर्म्स आ जाते हैं जितने भी, आर्थ्रोपोडास, एकाइनोडर्मेटास एंड वर्टिब्रेटास आर द एग्जांपल्स. सो जैसे कि हमने किया द ऑर्गेनिज्म दैट हैव कम अंडर द पोरिफेरा दैट हैव ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दीज हैव ओनली कंसिस्ट वन जर्मिनल लेयर. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट इज द what are the flatworms and why they so called? So the organism that are present or that are come under the phylum Platyhelminthes are known as the flatworms. So why they are called flatworms? Because they have flat body from top to bottom. So these organisms have triploblastic body. इनमें जो ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है. सो इनमें जो फ्री लिविंग और पैरासाइटिक एनिमल्स आते हैं, एंड इनकी एग्जांपल है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म. सो वी मूव टू द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा फाइलम इज द बिगेस्ट फाइलम of the kingdom Animalia. In this kingdom, this phylum include all the insects, and their bodies divide into the head, thorax and abdomen. So these organisms also have appendages, and these bodies covered with skeleton, and circulatory system is open. इसमें जो सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, कॉकरोच, हाउस फ्लाई. सो वी मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू मीन बाय द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिनमें कि ब्लड फ्लो के लिए और फ्लूइड के फ्लो के लिए स्पेशल वेसल्स नहीं होती हैं. जो फ्लूइड है वो कैविटी में मूव करता है. दैट ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट वेल डिफरेंशिएटेड ब्लड वेसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ और फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड दैट आर नोन एज विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो मूव टू द नेक्स्ट. What are the protochordates and why they are not true chordates? So first is the animal with the bilateral symmetry, and they possess the notochord at some stages of life. These organisms have not notochord at all the stages of life. Therefore they are not true chordates. एंड एग्जाम्पल ऑफ ब्लेनोग्लॉसिस एंड हार्डमनिया. सो इनमें क्या है कि इनमें ओनली सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, एट दी सम स्टेजेस ऑफ लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बाद में डिस्पेयर हो जाती है. दैट मीन दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट these organisms are not true chordates that are placed in the phylum protochordates. We'll move to the next. Explain phylum chordates. सो जो कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉर्डेट्स के अंडर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है. सो ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है. सो डॉर्सल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. दीज ऑर्गेनिज्म आर दी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म. सो these organisms that are present in the water have a pair of gills, and dorsal nerve cord is present. So notochord is present, and which is replaced by spinal column. So move to the next. Give the flow chart of the vertebrates. So vertebrates के अंदर जो आगे grouping है. So first we start from the fishes that live in the water and having pair of gills to breathe.
and scales and on their body, and they are cold blooded. That means their body temperature is changed with the change in the temperature of environment. So next is the amphibians. Amphibians are the spend their life on the water and also on the land. That means therefore they are known as amphibian, and these are also cold blooded. And next is the reptiles. Reptiles have scale and breathe scales on their body. These are also cold blooded, and they are the oviparous. That they means they lay eggs, not give birth to the young ones. So next we move to the birds. Birds are the warm blooded. That means their body temperature is not changed with the change in the temperature of environment. So therefore these are known as the warm blooded, and they have a pair of wings, feather and beak, and their body they also lay eggs. That means they are also oviparous. So next is the mammals, that are the highly advanced organism that have hair on their body, also warm blooded. Their body temperature is not changed with the change in the temperature of environment, and they drink milk and they give birth to young ones. That means they are the viviparous organism. So thank you, students.